Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity to speak on this important issue. Sir, I want to talk in a constructive criticism manner because there are many things that I wish to compliment the Honorable Minister and his government, but yet at the same time, I would like to point out that there are many steps that they need to take to better align the intentions which have been stated and the usage of the money for which this House is being asked to approve. Sir, we all know that in India, while we have a very large problem in rural India, urbanization is increasingly becoming a serious problem that has not got enough attention. For many decades, we have heard the phrase that what every Indian needs is roti, kapda or makan. In fact, by the turn of the century, 16 years ago, my late friend Devang Mehta, who used to head NASSCOM, he coined a new phrase that we all need roti, kapda, makan, bijli or bandwidth. Now, I compliment the minister and his government because they have been announcing good projects for all of these schemes, particularly bandwidth and bijli. And the good intentions and the numbers which they are announcing are very good. I'll give you an example, sir. Sir, this program which used to be called Housing for All, which has been relaunched last year as the Pradhan Mantri Awas Yojana, has very ambitious targets. During the JNNURM period of 10 years, 9 lakh urban housing were built. And here this government has announced a target of building 2 crore houses by the year 2022, which means 30 lakh new houses to be built every year. I commend this high target, but I have some things to say about it. Unless we can tackle urban poverty, unless we can tackle urbanization, we cannot improve India. And sir, while many people keep saying that India is about 35% urban, the reality is, depending on the measures that you use, if you use the same measures that China is using, today India is already 50% urban. And we must also keep in mind that no nation in the history of the world has become affluent unless it has handled urbanization properly. And urbanization is not only about flyovers, it is not only about metro rail lines, it is about the basic requirement of housing for every Indian. Let me point out some of the anomalies that I would urge the Honorable Minister to address. Sir, a lot of these houses are being built which are lying vacant. I want to give 2 or 3 examples. In December last year, it was noted by one of the largest newspapers in this country that about 25% of the housing built for the poor under JNNURM are lying vacant. Let me give you some specific statistics, sir. In Maharashtra, out of 1,23,963 houses built for the poor, 52,966 were lying vacant. That is, almost 43% were lying vacant. In Gujarat, sir, out of 1,18,000 odd houses built, 29,126 were lying vacant, which is almost 25%. I was asking some friends in this house from Maharashtra, and they were telling me that some of the housing built for slum rehabilitation are built as multi-story tall buildings because of the paucity of land, and they don't have lifts. So you cannot expect people to live on 10, 15-story buildings if you do not have lifts. These are some of the problems that need to be addressed. I want to also point out, sir, that I'm from the state of Odisha. Odisha had only 2% vacancy of the houses built for the urban poor. My point, sir, is where it is being properly utilized, should we not allocate more money? Should we not allocate more money where housing is needed, where it is being properly utilized, rather than those places where there are still a lot of vacant houses which need to be properly utilized? I urge the Honorable Minister that a body must be set up to ensure and coordinate with the state and municipal authorities that wherever these housing are built for the urban poor, proper coordination must be there that they are filled up. It does not serve anyone's purpose that we build tens of thousands of housing for the urban poor which are not used at all. I want to give you an example, sir. There is a report from Agra. 240 houses were built in a particular place. For the last 4 years, they have been lying idle. They have not been used, and they have deteriorated. They may not be usable anymore unless more money is spent on those houses.
My point is, while I compliment the Honorable Minister, I also urge him that corrective actions must be taken by his ministry so that the funds that we approve in this House are properly utilized. Sir, I told you that the ambitious target of 30 lakh houses to be built per year compared to the 9 lakh under JNNURM requires a lot of effort. Now, so far, as per the outcomes budget, by end of last year, only 25 memorandum of agreement had been signed with states and union territories, and for only 4 lakh houses. So this needs to be dramatically increased, and unless that is done, these ambitious targets will not be met. Another point I wish to make, sir, is the misalignment of utilization of funds and allocation of funds. Take, for example, the Deen Dayal Antyodaya Yojana, the National Urban Livelihood Mission, NULM. Sir, where there has been very good utilization of the money, there has not been follow-up with equally good allocation for the next year. Let me cite you some examples here, sir. And by the way, this has been pointed out by the Parliamentary Standing Committee on Urban Affairs and has been submitted to this House. Let me give you this example, sir. So, in this flagship program, despite utilizing 720 crores in 2013-14 and 697 crores in 2014-15, a revised estimate of only 250 crores was given in 2015-16 and budget estimate of only 300 crores in 2016-17. My point, sir, where you are, my point is where there is proper utilization, you must allocate more money. That must be the thrust of how we approve the budget for the government. And there are other examples where the utilization is not proper, or as I pointed out, there is utilization, but the houses are not being used. They are lying empty, and yet much more allocation is being made. So this alignment changes have to be made. I'll give one more example of how an alignment needs to improve, sir. Sir, urban problems is not only about the metro cities, not only about the cities that have 10, 20 million population. It is not only about the cities which have 1 million population. It is about, for example, I'm from Kendrapada. Our municipality in Kendrapada has less than 100,000 population. But with even less than 1 lakh population, it has become an urban center, and we have all the problems of urbanization, including slums, including water problem, including waste disposal. Kendrapada is the oldest municipality of Odisha, which is more than 135 years old. Honorable member from Cuttack, Shri Mahtab, is correctly pointing out in Odisha, Kendrapada is the oldest municipality, which has led to certain advantages for Kendrapada, like plumbing having become a trade since the mid-19th century. And you can see plumbers from Kendrapada are available everywhere in India and the Middle East, skilled workers who earn good salaries. Sir, my point is this, sir. Sir, under the NULM and under the NULM, there was a demand for us to extend to 77 local bodies in Odisha, which were earlier covered by Swarna Jayanti Rozgar Yojana, and this has been done. I would urge the Honorable Minister that this year-to-year changing, that sometimes some of the schemes are limited to certain size of cities, and next year they are cut off. And then again, after taking up, like this year, it has been re-initiated. That has to change, because if you don't have predictability of funding, there is no way that small towns and small cities can have the wherewithal to make proper presentation of budget of what they require and have access to that funding. Sir, I know time is limited. I just want to take a minute or two to round up. I want to compliment again the amounts that are being made available. Just 4 or 5 days ago, on the 29th of last month, the Press Information Bureau indicated that the ministry has approved an investment of 9,000 crore rupees for the construction of 73,205 more houses for economically weaker sections under the Pradhan Mantri Awas Yojana in the states of Maharashtra, Punjab, Jammu and Kashmir. I welcome it, sir. Wherever in India money is being allocated by the ministry for construction of housing for the urban poor, we will support it. My point, sir, where, as in the case of Odisha, we are doing better utilization in terms of the memorandum of agreement you have signed with 25 states. Odisha is the first one which has got started.
Please conclude now. Yes, sir. Just 1 minute, I will conclude. Sir, Odisha is the first one which has got started. We announced in August 2015 that under the PMAY, 700 houses are to be built in Bhubaneswar. Moreover, this will be using building materials that the Technology Promotion Council has been recommending, such as precast, prefabrication technology for quicker construction. I urge the Honorable Minister to make more funds available where the utilization is better and where the alignment of the objectives to what is actually being done on the ground is better. Thank you. With that, sir, I submit. Shri Kansinde. Thank you, Chairman, sir, for giving me an opportunity to keep my views on the demands for grants on housing and poverty elevation. I would say it is an ambitious target of housing for all, rather a courageous target by any standard by Government of India to provide housing for all by year 2022. In last 7 decades of independence, many schemes were launched to eradicate poverty. Yet today, when we are on the verge of becoming superpower, we are still fighting against poverty in many parts of the India. We know the nara given by late Srimati Indiraji, Garibi Hatao, but it still finds resonance across the crores of Indians. World Bank study done in May 2014 says that 58% of the population still lives on less than $3 a day, and 22% are still under poverty line. But those above the poverty line are not doing better. The ministry under able leadership of Honorable Venkaiah ji is doing everything to facilitate housing for all, the goal set by our Prime Minister. I will congratulate the government for passing the real estate bill, thereby giving protection to crores of Indians who are seeking to buy their homes. When we look at the budget estimate, earlier provision under the Pradhan Mantri Awas Yojana was 5,075 crores. 3,342 crores will be given to the states as grants. But in last week, the grants are increased to 9,000. So I would congratulate the government and thank the government to increasing this budget estimate. This brings us to the credit-linked subsidy scheme under Pradhan Mantri Awas Yojana. People from economic weaker sections given housing loans at a subsidized rate of interest rate of 6.5%, which is applicable only to the loan of 6 lakhs. But we know in 6 lakhs we are in the urban India, we cannot buy a affordable house. So I would sincerely request the government to increase this cap to at least 10 lakh, so that economically weaker section could buy his own home. According to KPMG report, we require 11 crore houses to achieve a target for housing for all by 2022. Obviously, it needs private capital in large manner. As we see, private companies do not come forward unless the government is seen to be investing in the sector, which gives them a confidence to invest in this sector. Same KPMG report states that central and state government are spending in the real estate sector is merely 3% of the total sector. It has to be increased. If we want to attract private and the foreign investment, the budget estimate and the investment by the central and the state government has to be increased. We come to a BSUP scheme which was introduced by the previous government, which really helped our cities to get rid of the slums. But this government has shut down this BSUP scheme, and because of the shutdown of these BSUP schemes, many projects are lying, as said by the Honorable Member Jai Panda, कि in Maharashtra, 50% or 43% of the houses are lying vacant. It is also because of the projects are stalled, cost escalation,
the urban local bodies are not able to bear this cost. So the earlier government has invested in these BSUP schemes. I request Honorable Minister कि a lot has been done in this BSUP scheme. If we give this, increase this, if we give the budget from the central government for this cost escalation, the stalled projects which are in lakhs of number could be completed and the slum dwellers will get their own house. Also, the bottlenecks at the policy level must be removed with utmost priority. If we keep changing the goalpost, keep tampering with the policy every now and then, the private companies will hesitate to participate in this mission. Best example is the Dharavi redevelopment in Mumbai, which is languishing for many years now. Latest round of latest round of global tendering drew zero response. That is because there is no clarity on the part of the state government. The area of free houses to be given to the slum dwellers keep changing every after 3 months. The government is unable to decide whether it wants Mahada to develop the Dharavi or wants a private developer. The result is when the government finally invited tenders, nobody was interested because you never know when the policy is changing. On the other hand, few kilometers from Dharavi, we have a Bendi Bazaar where the housing revolution is taking place in the form of cluster development. This 16.5 acres locality is redeveloped by a private developer, I think, which will be a template for the other states also and other cities also. Please conclude now. We need more and more such projects. Central and the state government should incentivize the cluster development, which will solve problems of the illegal buildings and give a citizen permanent and rightful homes. This approach is also needed because cities like Mumbai, Thane, Kalyan or all the suburban areas which I represent does not have enough space. We have to redevelop the existing old structures and go vertical in the areas to accommodate more and more people. Planning Commission, which is now replaced by the Niti Aayog. Shrikantji, please conclude now. Only 2 minutes, sir. I'm the only speaker No, from the... conclude in 1 minute, please. You have already taken more time. Niti Aayog has expressed need for national urbanization policy. This is need of an hour. India is rapidly urbanizing and development is taking without shape or order, making cities becoming more and more ugly. Such a policy also needs to be implemented in the solid waste management and the sewage disposal. Recent example is the Deonar dumping ground in Mumbai. The team from center has visited after many occasions of the fire. Capacity of dumping ground in Mumbai and suburban areas are at the saturation point. So I request the government to intervene in this and make a policy so that we can dispose the waste at the local level and or the ward level. Recently, National Green Tribunal imposed fine on 100 crores on some urban local bodies in my constituency because of failure to stop sewage water from growing into Ullas and Waldhuni river. This also needs a center attention. Rainwater harvesting should be made compulsory as it is done by most of the urban local bodies, but I would request the central government to make it as a center policy and should not be left to the discretion of the urban local bodies. Finally, the dream of affordable housing will get impetus only when the fees and taxes will be drastically reduced. Presently, 30 to 35% of the housing cost consists of fees and taxes. This is too high a proportion. This must be reduced. Or as in case of power tariff, we must adopt the principle of cross subsidy. As we all know, in the power tariff segment, certain segments are charged more than the average cost of supply so that the power can be supplied to economically weaker sections at the cheaper rates. Let's apply the same formula here as far as taxes in the realty sector is concerned. I would also like to draw the attention of this August House to the inadequate provision that has been made for the urban livelihood mission. As per the official website of the ministry, at present 970 cities are under this mission and the provision for the year 2016-17 is merely 325 crores. That comes to around 33 lakhs 50,000 per city, which is too meager to achieve the target of urban poverty elevation. Hence, this provision will also have to be increased substantially. Therefore, I request the Honorable Finance Minister through you and also Honorable Housing Minister Venkaiah ji to raise the provision of the urban housing as well as the NULM substantially. Thank you, sir. Thank you, Speaker sir, for permitting me to
speak on the demands for the grants 2016-17 in respect of the Minister of Housing and Urban Poverty Aviation relation. The ministry is headed by a dynamic minister, Sri M. Venkaiah Naidu, under the able leadership of Sri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India. The government is implementing poverty elevation programs. So because we are proud of him, sir, Venkaiah Naidu belongs to our state. He is a man with a character, conduct and commitment. So we are, on behalf of our state government, I convey my sincere thanks to Venkaiah ji because he sanctioned the 1,93,000 houses for our state, sir. In fact, last 3 years, before this NDA government, last 3 years, we got only 23,000 houses, last 3 years, sir. Even in the country also, our friend just now he left. Under the JNRMU, under A scheme, last 3 years, 3,90,000 houses under JNRMU, under A 17,040 houses, they have sanctioned throughout the country. But this NDA government, in the first 2 years itself, they have sanctioned nearly 5,08,000 houses. Because they have started so many schemes, good schemes, this is also one among them, sir. And the budget is also like this, sir, for urban development. 21,000 crores they have given. For the metro projects, 10,000 crores. For Amrut, 4,000 crores. Smart City Mission, 3,200 crores. Swachh Bharat Mission, 2,300 crores. CPWD, 879 crores. Hruday, 200 crores. Northeastern, 250 crores. PMA, 5,000 crores they have given. Day, NULM, 325 crores they have given. So I request, I don't want to give any statistics because many of our friends, they have given many suggestions. And I also convey my sincere thanks to our Honorable Minister because in our state, he sanctioned 3 smart cities. One is Visakhapatnam, Kakinada and Tirupati. But in fact, some of our friends are telling, he is an unbiased man, I know him since 40 years, because based on the state government proposals, he sanctioned either houses or smart cities. So based on the recommendations, nearly the government of India sanctioned 100 smart cities. Really, this is highly appreciable program, sir. And not only that, the metro also they have sanctioned for Visakhapatnam and Vijayawada capital city. And for our Amaravati, as a Hruday, they have given the permission, sir. Even our Honorable Minister Chandrababu Naidu is also regularizing the slum houses below 100 yards, sir. Because in the cities, the major problem is houses, sir. Especially for the poor people and slum people. So many of our friends, they told, some of the houses are constructed, they are vacant. So you give me some 2 minutes extra time for our party, sir, because I worked as ML also. I know the ground level reality. Because I worked as MLA in the last time, in the last tenure, sir. My constituency, urban, semi-urban and urban. So why even my constituency also thousands of houses are vacant. So some of the houses are lack of infrastructure, sir. Some of the houses in the JNRM scheme, the 50-50 ratio, the government of India and local governments, below 5 lakhs population cities, and in some cities 80-20. So many of the houses, they construct the houses, sir, thousands of houses by providing thousands of crores, but they will not provide an infrastructure, which costs lakhs of rupees. That's the one reason, sir. The second reason, so many of the poor people, the slums are located in the heart of the cities, sir. But when they are going to construct the new houses, they will allocate the new houses outskirts of the city, sir. So for the laborers and the poor people, traveling from the outskirts to heart of the city for their livelihood, it is very difficult. So that's why I request the Honorable Minister, when they are going to construct the 2 crores of houses, so see the location also, sir, because without having the proper location, if you construct the houses outside, it's very difficult for the poor people and laborer people. They cannot afford the transport and they cannot afford the time also. So instead of constructing a lakhs of houses and crores of houses in outskirts of the city, if you construct the limited number of houses virtually in the heart of the city,
by providing a lift facility and other facilities so that they will take advantage, sir. The main problem is land, sir. So land is a state subject, sir. Even though it is a state subject, in this country, it is a damn shame on our part, sir. After 67 years independence, one fellow is living in a 200 floors house in a Mumbai. And the same Mumbai, the 4 to 5 people are living in a 10 by 20 room. So because of the liberalization, because of the privatization, because of the globalization, the poor are becoming more poor, the rich are becoming more rich. So I wanted to appeal the Honorable Minister, the Government of India, please, you see about the policies, like your name, earlier Jawaharlal Nehru name, Rajiv name, now you have taken very good decision. Pradhan Mantri Awas Yojana, because Prime Minister is a permanent, the persons are not permanent. So that's why, like that, so please try to have a standard policy. Please try to have a standard policy on urbanization. Why the urbanization is increasing day by day means because of the poverty, because of the drought in the rural areas. Suppose if you see in our Telangana state, day before yesterday, I read in the Telugu newspaper, one of the Patel means he's a forward caste man, sir. He's having a 6 acres land. He's working as a NRGS labor. So because of the drought, not only in Telangana state, the many states. So I request the government, at least you please eradicate the poverty in the rural area. Please try to provide the employment in the rural area. Please try to provide the infrastructure facilities in the rural area like an urban area. Where other countries are doing, other countries they are having the satellite towns because they have the same facilities in the rural area and urban area. But in fact, the earlier governments, the present government, and even future also. Please conclude now, sir, please give the 2 minutes time. Because it's very important subject, sir. Because we have to think at this juncture. Please because conclude. I live in Hyderabad, conclude sir, in 1 minute, since please. 30 years. Because of this, our state bifurcation, now Hyderabad demand got reduced. So like that, we have to decentralize the facilities or economic policies. We should not only focus in the urbans. We should also focus in the rural areas, sir. The last one, sir. The employment, sir. Why the people are migrating from rural to urban means employment. So the many of the health facilities, education facilities, employment facilities, we are only focusing on the urban. So I request the Government of India, please try to give some concession, some encouragement. The people who are starting the industries or health hospitals or educational institutions in the rural areas so that we can eradicate the poverty in the rural area. Okay. The last one, sir, my humble submission to the Honorable Minister, because all our MPs, they will agree. Because he is heading the Parliament Affairs Minister and a Urban Poverty Alleviation Minister. The Government of India is spending crores of rupees through the various schemes. But unfortunately, many of our MPs are not having any hold on the schemes. Even if you see this housing, we are giving thousands of houses, but we are not distributing our local. Shri Rajendra Gawal. So we don't have any control on this Government of India schemes, at least because our Honorable Venkaiah Naidu ji is having a lot of experience. So please look into this issue so that the Government of India can function very effectively. धन्यवाद. Thank you. धन्यवाद आदरणीय सभापति जी. आपने आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया. मैं आपका आभारी हूं. यह आंकड़ा कई बार सदन में प्रस्तुत हो चुका है, पर मैं फिर एक बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि समस्या की गंभीरता फिर ध्यान में आ जाए. 12वीं योजना के प्रारंभ में अनुमान था कि लगभग 1,88,00,000 मकानों की जरूरत थी. जनसंख्या में इसको बदल दें तो लगभग 11 करोड़ लोग ऐसे जिनके पास मकान नहीं थे. 2022 तक इसके 2 करोड़ होने की संभावना है. इसमें 56% ऐसे हैं हमारी कुल आबादी के जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, उनको मकानों की जरूरत है. 40% LIG श्रेणी के हैं और 4% मध्यम वर्ग के हैं. कुल आबादी का 25% स्लम्स में रहता है, जिनमें से 54% अकेले ग्रेटर मुंबई की जो कुल आबादी है उसमें 54% स्लम में रहती. मेरे अपने शहर में भी, मेरठ में भी ऐसे लोगों की संख्या 40% है. जिन शहरों की आबादी 10 लाख या उससे अधिक है, ऐसे 46 शहर हैं, उनमें कुल मिलाकर के लगभग 38% लोग इन स्लम्स के अंदर रहते हैं.
समस्या बेशक बहुत ही गंभीर है और इस बात को पूर्ववर्ती सरकार के हमारे मित्र भी समझते रहे हैं। वो टिप्पणी करते हैं कि संसाधनों की कमी है, आपने एलोकेशन कम किए हैं। तो मैं एक दो बात कहना चाहता हूं। संसाधन की निश्चित रूप से कमी है। यदि हमारी अर्थव्यवस्था का आकार थोड़ा बड़ा और हो जाता, कुछ आर्थिक गतिविधियां बढ़ गई होती, कुछ बेरोजगारी के ऊपर नियंत्रण हो गया होता, तो शायद हमारे पास पैसा अधिक होता। तो सीमा तो है, लेकिन तब भी मैं कई बार सोचता हूं कि इस सत्र के अंदर बहुत वरिष्ठ सदस्य भी, जब कई बार पेट्रोलियम के दामों के नीचे गिरने के कारण से जो कुछ लाभ, जो कुछ पैसा सरकार के पास आ रहा है, हालांकि उसका अधिकांश हिस्सा बांटा भी गया है विभिन्न वर्गों को, जैसी जैसी आवश्यकता है, जैसी जैसी सरकार की सोच है, परंतु इस बात की शिकायत करते हैं कि पूरा का पूरा पैसा कंज्यूमर को क्यों नहीं डाइवर्ट कर दिया जाता। उनके ध्यान में ये बात नहीं आती संभवतया कि सरकार के पास यदि खर्च करने के लिए पैसा नहीं होगा तो कल्याणकारी जो कार्य हैं उनके लिए सरकार किसी प्रकार का एलोकेशन नहीं कर सकती। जो सीमाएं हैं ये, लेकिन ये भी टिप्पणी की गई कि सरकार ने जो योजना लेकर के आए हैं उनके अंदर कोई पुरानी बातें ही हैं, नई बातें नहीं है। मैं समझता कि गंभीरता जिसका मैंने उल्लेख किया, मैं मान करके चलता हूं कि यूपीए की सरकार ने भी इसको हल करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं, परंतु उनके प्रयासों का क्या परिणाम रहा है, हल्का सा मैं इसका जिक्र करना चाहता हूं। यूपीए 2 की जो सरकारें थी या यूपीए की जो सरकार थी, क्योंकि योजनाओं में जो राजीव आवास योजना है, राजीव ऋण योजना, RRY, JNNURM, ये कुछ ऐसी योजना थी और भी योजना छोटी मोटी थी जो इस समस्याओं के लिए समर्पित थी। इनका क्या परफॉर्मेंस है, थोड़ा सा मैं चर्चा करूं इसकी। 2010 से 2014 तक यूपीए की सरकार के समय जो औसत खर्च किया गया है वो 946 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से खर्च किया गया है। ये बीई से भी कम है और आरई से भी काफी कम है, और इसी कारण से एलोकेशन मंत्रालय के घटाने पड़े हैं। ये अनुभव आया है, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है। एनडीए की सरकार में 2014-15 और 2015-16 में ये खर्च 946.03 के स्थान पर 2235.65 करोड़ ये इसका औसत हुआ है। ये बात ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार एलोकेशन बढ़ा रही है, यद्यपि संकट है, अर्थ का संकट है, परफॉर्मेंस की समस्या है, परंतु एनडीए की सरकार ने इसकी गंभीरता को समझकर इसके ऊपर काम किया है। इसी प्रकार से यदि राजीव आवास योजना के अंदर मैं प्रोजेक्ट कितने प्रस्तावित हुए, कितने मंजूर हुए और कितने पूर्ण हुए, इसका यदि जिक्र करूं तो 2011 से लेकर के और 2015 तक, मैं प्रत्येक वर्ष का अलग अलग नहीं बता रहा हूं, समय की सीमा है, मुझे पता है 6 बजे समय को बढ़ाया नहीं जा सकेगा, तो कुल 1,68,207 प्रोजेक्ट मंजूर हुए, जिसमें से केवल 2501 प्रोजेक्ट पूरे हो पाए। मैं अपनी इस बात को इसलिए आग्रहपूर्वक कह रहा हूं कि हमारे यूपीए के मित्र भी समझें कि जो कठिनाइयां थीं वो कठिनाइयां एकदम से खत्म नहीं हो सकती। हमने कोशिश की है, हमने ये प्रयास किया है कि सारी की सारी पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, उसके अंदर चेक्स हो, उसके अंदर जिम्मेदारियां बढ़े, क्योंकि हाउसिंग की समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकाय सबके संयुक्त प्रयास के परिणाम के बाद ये हो सकता है। ये हमारी कोशिश रही है। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा की है जून 2015 में, जिसमें हमने इस एम्बिशियस लक्ष्य को घोषित किया है। उसके अंदर हमने कुछ शर्तें रखी हैं, उन शर्तों को विस्तार से नहीं कह रहा हूं। उन शर्तों का आशय यही है कि जिम्मेदारी के साथ प्रदेश की सरकारें और जैसा मैंने कहा स्थानीय निकाय उसका पालन करें। 4 कंपोनेंट इसके हैं, 4 आयाम हैं, जो विभिन्न प्रकार के वर्गों को, स्लम्स हैं या जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है या अफोर्डेबल हाउसिंग की इन पार्टनरशिप स्कीम है, और उसके इन सबके अंदर भी जो नहीं आता, ऐसे गरीब व्यक्ति को अपना मकान जो बनाना चाहता है तो 1.5 लाख की हम मदद देने की जो स्कीम है, ऐसी 4 स्कीम है, मैं उसका विस्तार से उल्लेख नहीं कर रहा हूं। तो हमारी कोशिश ये है कि इस प्रकार से ये समस्या हल हो। बस थोड़ा सा मुझे समय दिया जाए, 2-3 मिनट में मैं खत्म करूंगा विषय को। मैं 1-2 बात केवल माननीय सभापति जी कहना चाहता हूं। गरीबों के मकान की हम चिंता कर रहे हैं, परंतु 1-2 चीजें बड़ी चिंताजनक है। 2 जो एक संगठन है कह लीजिए या इंस्टीट्यूशंस हैं, हुडको और नेशनल हाउसिंग बैंक NHB,
इनको नोडल एजेंसी बनाया गया है। इन्होंने 177 प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के साथ एमओयू भी किया है, परंतु जो गरीब वर्ग का व्यक्ति है, गरीब वर्ग से जो आता है, छोटे मकान जिसको चाहिए, उसकी जो लोनिंग है वो क्रमशः घटती चली जा रही है। मैं केवल 2 मिनट दीजिए सभापति जी। 2 लाख तक की आय के लोगों का लोन का प्रतिशत 2% से 1% रह गया है। 5 लाख तक की आय का 14% से 9% रह गया है। 10 लाख तक की आय का 34% से 26% रह गया है। और क्योंकि बैंक लोन नहीं देते, बैंक को ये जरा अनअफोर्डेबल लगता है अफोर्डेबल हाउस की बात करना, इस कारण भी संकट है। मेरा निवेदन है कि बैंकों की जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, इसके अंदर इसको भी शामिल किया जाए और कम से कम प्रायोरिटी सेक्टर का 3% इस प्रकार के लोनिंग के ऊपर किया जाए। एक और मुझे बात कहनी है, अभी स्टैंप की बात हुई, मेरा अनुभव बड़ा चिंताजनक है जिसको मैं शेयर करना चाहता हूं सदन के साथ। जो सर्किल रेट्स हैं सभापति जी, सर्किल रेट्स बहुत जगह पर, मैंने इस विषय को पहले भी उठाया है, वास्तविक रेट से ऊंचे होते हैं। उसके कारण से एक अनावश्यक रूप से दाम बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और होम के को मोर्गेज करके जो कुछ लिया जाता है उसको डूबने की आशंका रहती है। इसकी तरफ भी हमारा मंत्रालय ध्यान दे। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार, अभी हमारे प्रारंभ में जो कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि अर्बन ये जो समस्या आई है शहरी क्षेत्रों में, ये कृषि की बिगड़ती स्थिति के कारण से आई है, लोग हट रहे हैं। इस सरकार की दृष्टि में समग्रता है, उस समग्रता के कारण से वो सारी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। वो गरीबों की भी चिंता कर रहे हैं, वो किसानों की भी चिंता कर रहे हैं। एक होलिस्टिक अप्रोच इस सरकार की है और मैं समझता हूं इस होलिस्टिक अप्रोच का समर्थन सबको करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। मैं केवल एक बात, मेरी थोड़ी सी, मैं एक लाइन कह करके, मेरे स्थान की एक कवयित्री है बड़ी प्रसिद्ध, उनकी लाइन कहकर अपने समाप्त करता हूं मैं कि नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय वेंकैया जी जिस प्रकार से अनथक परिश्रम कर रहे हैं कुछ संवेदनशीलता के साथ, उसको मैं समर्पित करता हूं। राह में कोई तो ऐसा भी दिखाई देगा जो तेरे पांव के छालों को बधाई देगा, करवटें लेता है संसार ये जिसके दम से, भीड़ में भी वो अकेला ही दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया बोलने का। थैंक यू सर। Sir, as per the entry 5 under the state list states can make law on local government. This includes the constitution and powers of municipal corporation and regulatory tax on lands and buildings. However, following the Constitution 74th Amendment Act 1992, several powers related to urban development such as urban planning, slum improvement, regulation of land use, etc. were transferred to the urban local bodies. State legislature by law can entrust power and authority to these ULBs. ULB can include municipal corporations, municipal councils and nagar panchayats. The amendment directed states to devolve 18 specific functions to ULBs. These include urban planning, regulation of land use, construction of buildings, roads and bridges, improvement and upgradation of slums, etc. Sir, currently about 31% of Indian population lives in urban areas, and the rate of urbanization is expected to increase in the next 10 to 15 years. With increased urbanization, the workforce in urban areas is increasing. The ratio of population participating in the workforce in urban areas increased from 32% in 2001 to 35% in 2011. Increasing population along with an increase in workforce increases the demand for housing and basic services in urban areas. Sir, at the beginning of the 12th 5-year plan, the house shortage was estimated to be at 18.78 million units. This shortage is expected to increase to 20 million by 2022. It was estimated that about 56% of this shortage falls in the economically weaker sections, 40% in lower income group category, and the rest 4% in the middle and higher income groups. So now coming to the budget, the total expenditure of MOHPA
for 2016 and 17 is 5,411 crores. Of this, about 94% is allocated for Pradhan Mantri Awas Yojana, urban rupees 5,075 crores. The following, this is followed by an allocation towards the other schemes like the National Urban Livelihoods Mission at 325 houses, sir. Sir, this BE, if you see the BE 2015 and 16 budget estimates, it was 5,634 crores. But actually the RE, recurring expenses, if you see, is 1,961. I do not know why this much of amount was absolutely not used. But now also, having so much of demand for the houses, shortage of the houses in the urban areas, as the people in the urban areas have increased, people have migrated from rural areas, as one of my friend or colleague from the TDP has said that there are no rains in the villages and there is no agriculture. Many of the people are agriculture landlords are coming into the urban areas and becoming laborers. Having all that also, there is a minus 28%, that is 2015-16 was 5,634, but now the 2016-17 is 5,411 crores, sir. So I don't understand when Narendra Modi ji, coming from a poor family, एक गरीब आदमी, अब बोला जाता है कि चाय बेच के, चाय वाला था स्टेशन के ऊपर में, वो आदमी पूरे कष्ट देखते हुए, हर आदमी का वादा देखते हुए, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद हर आदमी सोचता था कि गरीबों का फायदा होगा, गरीब को एक खाने के लिए खाना होगा, एक छोटा सा घर होगा और उनके हाथ भर के काम होंगे उनके साथ। लेकिन आज का दिन अगर देखा जाए तो खाली हमारा तेलंगाना का बजट, तेलंगाना स्टेट का जो बजट है, जो नया राज्य है, जो नया राज्य बना है, 60 साल जो है हमारा पैसों की लूटी हुई थी, वो राज्य के अंदर में हम प्रजा की तरफ देखते हुए, प्रजा के संक्षेप के तरफ देखते हुए, हमारा खाली 1 साल का जो बजट है हाउसिंग के लिए 13,000 करोड़ रुपया है सर, 13,000 करोड़ रुपया। हमने देखा कि सेंटर से जो हमने डिमांड लगाया 80,481 houses were been demanded from our state. Center has very nicely, they have considered this and they have given us 80,481 houses. But at what cost, sir? आज क्या कॉस्ट, क्या खरीद, क्या आ रहा है? ये लोग जो दे रहे हैं 1,50,000 रुपये घर के लिए दे रहे हैं सर। 1,50,000 रुपये का जो घर के अंदर में, जो 360 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर में आदमी किस तरीके से जी सकता है सर? एक कमरे का घर, एक कमरे के घर के अंदर में बीवी और बच्चे के साथ में किस तरीके से रहेगा, अपना भाइयों के साथ में किस तरीके से रहेगा, अपने माँ बाप के साथ किस तरीके से रहेगा, और कोई अगर रिलेटिव बाहर से आए, कोई उनको विजिट करने को आए, उनको कहाँ रखेगा सर? खाली एक 3,000 स्क्वायर फीट का रूम के अंदर में ये लोगों को जो 1,50,000 रुपये के अंदर में जो दे रहेगा, वो किसी को भी 350 स्क्वायर फीट का घर के अंदर में वो आदमी खाली हल भी नहीं सकता है सर। मेरे जैसा आदमी तो घुस ही नहीं सकता उसके अंदर, घुसते ही रूम खत्म हो जाएगा मेरे को लगता है। लेकिन आज तेलंगाना के सरकार केसीआर सीएम ने प्रजा का क्षेत्र को ये देखते हुए वो लोगों के लिए 560 स्क्वायर फीट का घर, 2 बेडरूम हाउस टोटल सब्सिडी के ऊपर में सर, अर्बन एरिया के अंदर में 7 लाख रुपए, एक किचन, एक बाथरूम, 2 बेडरूम्स, एक हॉल, 560 स्क्वायर फीट ऑफ हाउस जो है सब्सिडी, फुल सब्सिडी के ऊपर में वो लोगों को दिया जा रहा है सर। ये साल का हमारा टारगेट है 2 लाख घर, 2 लाख घर के अंदर में,
ऑलरेडी हम लोग 60,000 हाउसेस हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं सर। तो मैं ये सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि जब एक स्टेट, एक राज्य खाली 13,000 करोड़ रुपए अगर इसके अंदर बजट में रख सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इतने स्कीम्स का नाम लेते हुए ये स्कीम्स के अंदर में क्यों इतने कम दाम के ऊपर में घर दे रहा है? ठीक है, क्यों इसके सर देख एक ही सेकंड सर, तो अभी तो खाली में घरों के ऊपर नहीं हो गया, अभी एलिवेशन पे पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर में आने का था, तो उसमें भी मैं आपका मेरा कट शॉर्ट करते हुए मैं ये भी बताता हूँ सर, जो आदमी रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आता है तो उसको काम के लिए भी कुछ पैसा चाहिए, उसको जो है ना एक रोजगारी दिखाना चाहिए, और रोजगारी के लिए भी आज इससे पहले जो सरकारें थे वो सरकार के अंदर में खाली 2 लाख रुपए लोन मिलता था सर, 2 लाख रुपए लोन मिलता था और 30,000 रुपीज उसके अंदर में सब्सिडी मिलता था। लेकिन आज टीआरएस केसीआर के इसके अंदर में नेतृत्व के अंदर में 10 लाख रुपए का लोन दिया जाता है और 50% जो है सब्सिडी दी जाती है एससी एसटी बीसी सबके लिए सर। मतलब मेरा मतलब ये है सर, ठीक है, समाप्त करें। जब इतना शॉर्टेज ऑफ घर है, ठीक है, इतना बेरोजगारी है, तो मैं चाहता हूं कि अर्बन मिनिस्ट्री के अंदर में अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के अंदर में ये जो बजट है उसको बढ़ाया जाए और प्रॉपरली इसको खर्चा की जाए। क्यों बोलते लास्ट टाइम 2015-16 के अंदर में इसको खर्चा नहीं किया गया है, तो एटलीस्ट तेलंगाना को एक लैंडमार्क देखते हुए यहाँ का नीति जो है हर राज्य के अंदर में आप लोग उत्पन्न कीजिए। धन्यवाद सर। Honorable Chairman sir, I rise to speak on the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation. Sir, in this year budget, it shows that 176% has been increased in the budget. But what was the reality, sir? In the 2015-16, we have seen that from the 2014-15, the actual expenditure was, sir, 2,728 crores. But in revised estimate 2015-16, it has been decreased to 1,961 crores, sir. So a decrease of 28% from 2014-15 to 2015-16. So it may show that budget estimate is a good one, 176% increase. But in real term, the money which has been given in the budget estimate, in the case of revised estimate and in the actual expenditure, the money is being decreased. So, in the case of expenditure from 2009 to 16, I am not giving the certificate to UPA government, sir. We have some reservation with the UPA government's policy. But what we have seen here, sir? Sir, from 2009-10 to 2015-16, UPA government's utilization, actual utilization, was more than the time of NDA government. At the time of UPA government, it was not good, but 68% in the year 2009-10. 2010-11, it was 96%. In 11-12, it was 86%. So I am not going all the years. But in the case of 2014-15, it has been decreased to 45% in the case of expenditure of the ministry. In the state plan outlay, sir, it has been shown that in the 2014-15, the actual utilization was 49%, sir. And in the 15-16 again, the decrease is continuing. It is 36%. Only it is the actual utilization. So, sir, the
matter which has been placed here under the central assistance under Rajiv Awasan Yojana, it has been shown that in the case of northeastern region and for the special category states, it is 80% of the project cost. My demand to the Honorable Minister that in the case of northeast region and special category, earlier special category states, this should be 90:10. Sir, in the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, again, it has been shown in 2016-17, the allocation towards Prime Minister Awas Yojana Urban is estimated at rupees 5,075 crore, which is an increase of 233%, it has been shown. But what is the actuality, sir? In 2015-16, of these, only 4,390 crore will be released to states under Prime Minister Awas Yojana, sir. Sir, I am concluding. Sir, in the case of National Urban Livelihood Mission, in 2015-16, the allocation towards NULM decreased by 45%, sir. Now I am coming to, sir. Please conclude now. Yes, sir, concluding. Just coming. I am from a small state, sir. Nobody is looking after the small state, sir. You are from, sir, from a big state. So I like to place some matter with you, sir. Throw you to the Honorable Minister. Sir, in our state, funds have been allocated for several projects. But what we are seeing, that all the funds which are required for the fulfillment, for the finishing of the work of the states are not being released. So, it is my demand for you, sir, to the Urban Development Minister, that it is necessary for housing projects under Rajiv Awasan Yojana for Kumarghat, Khowai, Sabrom, concluding, sir. Just 1 minute, sir, just 1 minute. And Amarpur of the state of Tripura need to provide funds for slum housing at Dharmanagar, Tripura under 10% lump sum. Need to provide funds for town hall at Bilonia, Tripura under 10% lump sum. Need to provide funds for town hall at Sunamura, Tripura under 10% lump sum. So, need to confirm funding pattern for smart city mission as declared by Finance Minister. Please try. Kindly cooperate with me. अब बुला दिया मैंने रेड्डी जी को, अब बाकी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा. Thank you, sir. As my honorable MP, the earlier speaker spoke. Kindly conclude your speech within 5 minutes. Sure, sir. As my earlier speaker spoke, the current year's budget estimate of for this department at 5,411 crores is impressive. Prima facie, this amounts to 260% increase over the revised estimate of 1961 crores. But if you see for the past 2 years, in the last year, if you see against the budget of 5,634 crores, only 1961 crores was spent. And the year previous to that, for a budget of 6,008 crores, only 2,078 crores was spent. So the moot point is, what is the expenditure going to be this year for the department? India is having, there's a huge increase in the urban population. Right now we are in the 32% levels, and it's going to reach 50% levels very soon. But this growth of urban infrastructure needs to be complemented and accompanied by growth in urban infrastructure and delivery capabilities. As a result, cities are facing a lot of problems, including water, waste management, energy, mobility, healthcare, safety, and education. As a consequence, the poor in the urban areas are the most affected. In India, the rural poverty is reducing at a faster rate than the poverty in the urban areas. So, thanks to programs like Manrega and other poverty elevation programs in the rural area, I request the minister to consider Manrega and smaller municipalities with proximity to the rural areas and villages.
an estimated 65 million people or 13.6 million houses are, people are housed in the urban slums. According to the 2011 Indian survey, an estimated 1.8 million people are homeless. Housing for All 2002 project of Union government is an ambitious project aiming to build 20 million dwellings with toilets, power and electricity by 2022. We appreciate this initiative. However, experts feel that a combination of improving the existing dwellings and a combination of building new dwellings will make this a reality. This ambitious project, though noble in its concept and design, is yet to take off because it needs greater coordination from the states, support from the bankers, and overall effort is required for this. Sir, in this, for example, in our state of Andhra Pradesh, unit costs around 4.8 lakhs. In this, 2 lakhs is the loan component, 1.5 is the center's component, 80,000 the state is giving. But the 2 lakhs loan is a huge deterrent because most of the people are living in this $2 to $3 range, and there's a lot of drought. There's not much of income in my area, sir. Sir, we request the government to improve the subsidy component. There should be a choice also for the size of the dwelling, sir. It shouldn't be only 400 SFT. Even if people want 250 SFT because they're not able to afford the bank loan or whatever, it should be given, sir. And government should seriously contemplate increasing the subsidy. Otherwise, this dream of building house for everybody by 2022 will not be a reality. Sir, selection of beneficiaries is a very critical issue. Sir, in our state, Janmabhoomi committees are finalizing which person is to be benefited. These Janmabhoomi committee members are handpicked by the ruling party, and these people bypass the government machinery. These people bypass the elected representatives. There are complaints that these people, only one particular party people are getting benefited out of the government schemes. We request the minister to adopt a uniform methodology so that everybody in the country is entitled for a fair right. Sir, I'll conclude, sir. I also request the Honorable Minister to give a larger say for the MPs to participate in this, in the selection process and for the execution of this project. Shri Uday Thank you Pratap very Singh. much, sir. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं बहुत संक्षिप्त में, और जो चूंकि मैं आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की जो हमारी मांग है, अनुदान की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं, और बहुत सी चीज़ें जो निकल कर आई हैं कि इस देश में नहीं हो रहा, 5-7 मिनट में अपनी बात रखने का आपके सामने कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को और इस देश के वरिष्ठतम मंत्री श्रद्धेय वेंकैया जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों में भटकी हुई व्यवस्था को रास्ते पर लाने का काम किया है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि 2 वर्ष हो गए और ये अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास कहीं समझ में नहीं आ रहा। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि एक ऐसा मंत्रालय जो 13 मई 1952 को बना, 5 बार इस मंत्रालय को नाम बदलते हुए अंतोगत्वा 2004 27 मई को आवास एवं शहरी उपशमन मंत्रालय के नाम से स्थापित हुआ, और आज भी ये मंत्रालय 2004 के बाद यथावत है, उसके बाद कोई संशोधन नहीं हुआ। एक और अच्छी मंत्रालय को लेकर और देश को लेकर जो बड़ी नीति हमारे देश में बनी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में योजना आयोग को समय के साथ समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग बना। जो एक्सपोजर कई बार नीतियों और योजनाओं का नहीं आ पाता था, वो योजना आयोग के काम करने की विसंगति के कारण नहीं आता था। नीति आयोग के बनने के बाद कामों में आसानी हुई है, और जो देश में योजनाएं बनती हैं उनका जमीनी स्तर पर पहुंचने का जो समय है वो भी कम हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। 2 जून 1914 को नेशनल हाउसिंग बैंक, इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन और फिक्की का एक कार्यक्रम था, उसमें माननीय मंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया था, बड़ा अनाउंसमेंट है इस देश के लिए, कि हम 2022 तक हर गरीब के सर के ऊपर पक्का छत देंगे। ये वो बड़ा आश्वासन है, ये वो बड़ा
लोगों के लिए एक सहारा है जो इस देश की जनता ने एनडीए की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व बनाते समय लिया था। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आपके सामने कहना चाहता हूं कि इस देश में हमारा जो शहरी विकास मंत्रालय है, गरीबी उपशमन मंत्रालय है, इसने कौशल विकास के लिए भी बहुत काम किया है। ये प्रदेशों की भी जिम्मेदारी है, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा। मध्य प्रदेश हमारा राज्य है जहां पर 5.6 लाख लोगों को ट्रेन करने का काम इस डिपार्टमेंट के माध्यम से किया गया। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है जहां 4.8 लाख लोगों को ट्रेन करने का काम किया गया। अगर राज्य की सरकारें भारत की सरकार के साथ बेहतर समन्वय के साथ, अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगी, मुझे लगता है कि भारत सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन और बेहतर और उनके परिणाम और सार्थक हमको सामने नजर आएंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी जो सरकार है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबसे अच्छा काम ये कर रही कि जो निर्णय लिया उसको पूर्णता तक पहुंचाना है। गरीबी हटाओ का हमारे किसी पूर्व वक्ता ने कहा था, 1971 में गरीबी हटाओ का आंदोलन आया, वहां पर यह चुनाव में बात रखी गई, लेकिन आज तक गरीबी हटी नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है किसी भी काम को लो उसे पूरा करके दिखाओ। उन्होंने जनधन योजना, गरीबों के खाते खोलने का काम अगर हाथ में लिया। अब समाप्त करें आप। 3 मिनट हुए, 3 मिनट सभापति महोदय, कम से कम 5-7 मिनट एक वक्ता को मिलना चाहिए। रूलिंग पार्टी 3 वक्ता है, आखिरी वक्ता हूं मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, जनधन योजना पूरे देश के खाते खोले गए। उज्ज्वला गैस हमारी सरकार दे रही, पूरे देश की गरीब बीपीएल महिलाओं को सीधा एक बार में गैस देने का काम करेगी। 12 रुपए में बीमा करने का काम अगर भारत की सरकार ने किया, पूरे देश में व्यापक रूप से किया। भवन बनाने का काम हमारा माननीय वेंकैया जी का मंत्रालय करेगा, पूरे देश में 2022 तक ये करेगा। सबसे महत्वपूर्ण, भ्रष्टाचार खत्म करने का अगर काम किया है तो पूरे देश में एक साथ भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान को बनाने की जो कल्पना थी उसको पूरा करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, हमारा देश पिछली सरकार की नीतियों के कारण, पिछली सरकार की नीतियों के कारण हमारा देश जो दुनिया के 188 देशों में 130वें स्थान पर आता था, आज हमारी हालत यह है कि जीडीपी में हम 10वें स्थान पर हैं, लेकिन जो विकास का सूचकांक है उसमें 185 देशों में 130वां स्थान है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें शहरी गरीबी हटाने के लिए कई चीजों पर काम करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, सभापति महोदय, मैं आपके प्रति धन्यवाद देते हुए, सभापति महोदय, ठीक है बैठे। जो मैं एक आग्रह, जयप्रकाश जी एक आग्रह कर दूं, 4 वक्ता भी हैं इस विषय में बोलने वाले, उसके बाद में माननीय मंत्री जी का उत्तर शुरू होना है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं चारों से ही कि 2-2 मिनट का समय लेकर समाप्त कर दें। 66 मिनट का दे दीजिए सर, बस यही रिक्वेस्ट है। आप पूरा कर देंगे, पूरा कर देंगे। जो 2016 और 17 का अनुदान मांगे पेश किया गया है, वो कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। भागलपुर, मुंगेर सहित बिहार के सभी जोनल शहर मुख्यालय में एवं बिहार में गरीबों के आवास उपलब्ध कराए जाएं, यह मेरा कट मोशन है। सभापति महोदय, जो आवास योजना और गरीबी उन्मूलन, आज इन बातों पर चर्चा हो रही है। माननीय मंत्री जी से बड़ी अपेक्षाएं भी है और माननीय मंत्री जी से आग्रह भी करते हैं कि जो गरीब हैं, जो प्रताड़ित हैं, जो उपेक्षित हैं, जो लाचार हैं, बेबस हैं, जो शहर में हैं, जो स्लम में हैं, उनकी सुख सुविधाओं पर जो है विशेष ख्याल रखा जाए। आज जो है हजारों साल से जिनके आंखों में आंसू बह रहा है, गरीबी उन्मूलन की बात हो रही है। जो हजारों साल से जिनके आंखों में आंसू बह रहा है, उनके आंसू को पोंछने का सवाल है। जो इंसान बैसाखी के भरोसे चल रहा है, उसको जो है सहारा देने का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने नारा लगाया था इस समय में कि रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, और आज गरीब जो है भगवान के भरोसे रहते हैं। और आज के तारीख में हमारा जो है सत्ता संपत्ति जिनके हाथों में है,
उनके पास पूर्णमासी है, लेकिन आज जो स्लम में रहते हैं, शहर के अंदर गरीबी गुर्बत में रहते हैं, उनके घरों में अमावस्या की काली रात है। इसलिए नौकरी पर, पैसा पर, रोजगार पर राजा और रंग देखना है तो एक तरफ शहर है, एक तरफ जो है स्लम है। यही है सुख रानी और महारानी की लड़ाई। आज जो जनगणना का रिपोर्ट है, इसको प्रकाशित कीजिए कि कौन रिक्शा वाला है, कौन ठेला वाला है, किसको एक बित्ता जमीन नहीं है, कौन भिखारी का काम करता है, कौन मजदूरी करता है, कौन पसीना चुबाता है, कोई खाते खाते मरता है और कोई रोते रोते मरता है। यही हमारा हिंदुस्तान है। एक मिनट बस, एक बार हम जानते हैं कि समय अधिक नहीं मिलेगा, इसलिए कि जब बोलने के खड़े होते हैं तो लगता है कि कुछ बात रखी जाए, लेकिन जो आज गांव स्मार्ट सिटी की बात होती है, स्मार्ट सिटी बगल में श्रम है, वही वहां सोते हैं, वहां नाली नहीं, बढ़िया व्यवस्था नहीं, पीने का पानी नहीं। आज स्वच्छ भारत की हम चर्चा करते हैं, गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं। इसीलिए स्मार्ट सिटी तब बनेगा माननीय मंत्री जी, जब स्मार्ट सिटी के अंदर गांव जो गरीब लोग हैं, स्लम में रहते हैं, उसको जो बनाना पड़ेगा। और हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, तभी भारत बनेगा, तभी भारत में समृद्धि का रास्ता निकलेगा, तभी स्वच्छ भारत बनेगा। इन्हीं के साथ हम धन्यवाद सभापति महोदय। आप भी 2 मिनट में समाप्त करेंगे। 3 मिनट लूंगा, उसके बाद मैं अपने आप बैठ जाऊं। चलिए सभापति महोदय, आपने हाउसिंग एंड पॉवर्टी एलिवेशन पे मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जिसके अंदर पिछले 10 साल में 33% गुड़गांव जैसे शहर के अंदर अर्बनाइजेशन हुई है। और आज जहां हम पॉवर्टी एलिवेशन की बात करते हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि बड़े गंभीरता के साथ हमें इस विषय को लेकर जाना पड़ेगा। आज भी जिस तरह डाटा सरकार द्वारा निर्धारित किया गया, प्रकाशित किया गया, उसके अंदर बताया गया कि हरियाणा के अंदर जेएन नाम के तहत पिछले 3 सालों में 2573 फ्लैट बनाए गए, मगर अभी भी जेएन नाम के तहत जो फरीदाबाद में फ्लैट बनाए गए थे, उसके अंदर लोगों ने अपना आशियाने को लेने का काम नहीं लिया। आज भी वो झुग्गी झोपड़ियों में रहना पसंद करते हैं। इसी तरह आज जो सरकार ने डाटा दिया, राजीव आवास योजना के तहत 280 इस साल ड्वेलिंग्स दिए गए और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 409। जिस तरह अर्बनाइजेशन है, जिस तरह 2022 का प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को एक आशियाना दिया जाएगा, मुझे लगता है कि सरकार को बहुत अधिक तौर पर हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मैं इतना ही बोल के समाप्त करूंगा, क्योंकि समय की कमी है, कि आज जब हम ड्वेलिंग्स बनाते हैं, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हमारी बेसिक सोच नहीं होनी चाहिए। हमें उसके साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे उनके बच्चों के लिए स्कूल्स की हो, उनके लिए कम्युनिटी सेंटर्स की हो, पार्क्स की हो, हॉस्पिटल्स की हो, क्योंकि पिछले 10 सालों में जिस तरह अर्बनाइजेशन हुई है, हरियाणा के अंदर पार्कों की जमीन भी स्कूलों को बेचने का काम किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसकी भी इंक्वायरी करने का काम करेगी कि जिस तरह के मिसडीड्स पिछले अर्बन प्लानिंग में हुए हैं, आने वाले समय में प्रधानमंत्री के सपने में इस तरह की मिसडीड्स हमें देखने को ना मिले। समय की कमी है, इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ईटी मोहम्मद बशीर, very much for giving me this opportunity. Kindly conclude in 2 minutes, please. Yes, sir. So the whole nation is concerned on this issue, housing and urban poverty alleviation. So the subject is very relevant in Indian situation because urban housing shortage in India is estimated to be 18.78 million during 12th plan. So our dream, that is not poverty alleviation but poverty elimination, as correctly pointed out by the Honorable Prime Minister. Economic development and urbanization is closely interlinked because Indian cities contribute 60% of our GDP. It is high time to review the existing scheme, its bottlenecks and inadequacies. Sir, we are having here about 12 schemes pertaining to this housing and urban property aviation. Considering the time frame, I don't want to narrate all these things. Sir, how is the level of poverty is measured? Where exactly the demarcation line is to be drawn? That's a problem.
Sir, Tendulkar committee formalized there. Rangarajan committee formalized also there. But sir, in fact, the average, on an average, it is estimated that 35% of urban population is under the grip of acute poverty. Sir, our dream on slum-free India remains as a dream without much progress. So what happened to our roti kapada or makan slogans? We have to think loudly. We need not have disappointment, sir. Things are progressing, even though it is in a dead slow manner. Let us now examine our goal setting. Housing for all. That too, the cost-effective technology link. Sir, 1 minute, sir. Only 2 minutes. National urban rental housing policy is in the formulation stage. It is happy to note that the government is on preparation of a model policy of affordable housing for the states. Plan of action suggested by National Resource Center on urban poverty is also before us. Now, how to translate our ideas into action? With 1 minute, I will say, sir, it should be a joint effort of central and state government and local self-government. Cross coordination between various ministries, such as environment, health, education, social justice, etc. is required. With these few words, sir, I conclude. Thank you very much. सभापति महोदय, आपने आवास और शहरी गरीबी उपनिवेशन मंत्रालय के अनुदान मांग पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महोदय 2 मिनट 3 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं बिहार से आता हूं। बिहार पहले से भी पिछड़ा राज्य रहा है। सभापति महोदय, माननीय इस देश के प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार से आकर और देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जब आकर बैठे हैं तो जितने भी पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, सबकी निगाहें वहां टिकी हुई है। महोदय, 2 साल हो गया, आज तक उन्होंने कहा था कि हर गरीब को मैं पक्का मकान जरूर दूंगा। उन्होंने वादा किया था। आप लोग हल्ला क्यों कर रहे हैं भाई? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से बोल रहा हूं कि आज देश की जनता इनके तरफ ताक रही है कि कब मेरा यह आवास बनेगा। महोदय, मैं अभी दिल्ली में कॉलोनी में घूम रहा था। हमारे क्षेत्र के बहुत लोग हैं, वहां क्या हालत है। चलने के लिए व्यवस्था नहीं है, नली का व्यवस्था नहीं है, छत तो दूर गया, एक अगर रूम है तो 8-8, 10-10 परिवार उसमें सोते हैं। सभापति महोदय, पानी की व्यवस्था नहीं है, बाहर से लोग पानी के लिए जाते हैं। तो यह हर दिल्ली में जो लोग हैं बाहर से आते हैं, ग्रामीण इलाके के लोग कहते हैं कि शहर में लोड बढ़ गया है, शहर में मकान बन रहा है, अपार्टमेंट बन रहा है। उसके बारे में भी आप सोचिए, जितना अपार्टमेंट बनता है, एक तल्ला आप गरीबों के लिए कर दीजिए तो निश्चित रूप से जो हमारे गरीब हैं उनको एक तल्ले का अगर इंतजाम कर दे तो मैं समझता हूं कि हर गरीब को पक्का मकान शहरों में मिलना शुरू हो जाएगा। सभापति महोदय, मैं बिहार से आता हूं। मैं शहरों की बेरोजगारी को देखते हुए बाल मजदूरी की समस्या भी है, इसे भी निपटने की जरूरत है। महोदय, उन गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधार के लिए बगैर बाल मजदूरी पर नियंत्रण किए हुए यह संभव नहीं है। मैं चाहूंगा कि हमारे संसदीय क्षेत्र नालंदा है, बिहार शरीफ को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए अधिक फंड दिया जाए। यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Time is very short, so I will keep myself brief. So today, while I was coming to the Parliament, I saw a piece of news that Honorable Prime Minister of India is very unhappy with the communication cell of his party. And the reason for his unhappiness is that there is not enough propaganda in the public domain about his work. I would like to bring to the kind attention of the Honorable Urban Development Minister that the propaganda of Prime Minister Modi's work often is counterproductive to him, sir. Why am I saying it is very important? Because when this government said housing for all till 2022, the BJP cadre has gone to the field and said Modi ji sabko ghar denge muft mein. But if you look at the 40-page guideline of Pradhan Mantri Awas Yojana, there are 4 verticals, sir. My time is short. Each one of them
is talking about components which are largely going to depend on one thing. First thing is the availability of land. Second is going to be involvement of the private sector, and thirdly, what is going to be is the capacity of a person to take a loan and then furnish that loan. I admit the interest is only 6.5% and the EMI are going to be easily done. But the question is that will we be able to give housing to so many people, whereby by 2050 the urban population is going to go up to 81 crores, and that there are already 49,000 slums which exist in urban areas. I want to emphasize to the Honorable Minister, just last line, if you really want Prime Minister Modi's slogans to turn into reality, please work towards your policy to actually make the housing affordable, because where it is depending on a resource like land, which is a costly resource, it is not going to be affordable housing. And my last point is, I have a few suggestions that have come in the KPMG report, and I think they are doable. Please look at some reforms vis-a-vis taxes and fees which apply to housing and building companies. Now. And the second thing I would like to say is that please prepare, sir, for single window clearances for housing projects. And lastly, I would like to say, just एक sentence. It's a specific question. Last sentence. I would like Honorable Viduri ji, एक second. I'm requesting you. Sir, I want to give a small example. In the AHP, affordable housing in partnership, I would like to ask the Honorable Minister that you are giving a subsidy of 1.5 lakhs. But with the bill... अध्यक्ष जी, दिल्ली के गांव 360 गांव में दिल्ली बसी हुई है। ये जो अभी बातें कर रहे हैं अच्छे दिन आने वालों की, छाछ तो बोले छल्ली बोले, इसमें 100 छेद। 60 साल से राज कर रहे हैं और दिल्ली के गांवों की जमीन डीडीए के नाम से हड़प ली, और उन गांवों के विकास के लिए 1 इंच जमीन ये दे नहीं रहे हैं। उन गांवों का विकास नहीं हुआ। अनियमित कॉलोनियों में दिल्ली बसती है, 2000 कॉलोनी है, जिनका डेवलपमेंट करने के लिए 15 साल से शासन में बैठे रहे दिल्ली में, और 10 साल से मेरा माननीय मंत्री जी से गुहार लगाता हूं मैं, क्योंकि दिल्ली एनसीटी है, नेशनल कैपिटल है, इसलिए उस एनसीटी के अंदर लैंड भले ही दिल्ली सरकार के अधीन है, सरकार योजना बनाए। नौटंकी मुख्यमंत्री ने घोषणा तो की कि अब सबको अनुत्तरित कॉलोनियों को पास करेंगे, लेकिन उन कॉलोनियों की तरफ देख ही नहीं रहे। तीसरा वर्ग है सर झुग्गी झोपड़ी। हम जो झुग्गी झोपड़ी के अंदर 2022 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम आवास देंगे। कांग्रेस के शासन में कॉमनवेल्थ गेम से पहले इन्होंने वायदा किया था। एक सेकंड सर, 1 लाख झुग्गियों में लोग रहते हैं सर। सरकार एक व्यवस्था करे कि हर वर्ष दिल्ली की कितनी झुग्गियों को उठाकर हम उनको रिसेटल करेंगे। इन्होंने नौटंकी की राजीव आवास योजना के नाम से 15,000 फ्लैट बनाने की बात की थी, वो आज तक नहीं अलॉट किए गए हैं। इसलिए आपके माध्यम से मेरा निवेदन है, शहरी विकास मंत्री जी, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, सेक्शन 81 और 133 जो भ्रष्टाचार का कारण कांग्रेस ने बना रखा था, वहां वो लोग अपनी जमीन में कुछ करते तो करने नहीं देते, उनको भी उनका खत्म किया जाए सेक्शन 133 को और 81 को। वो शहरी विकास मंत्री को राज्य सरकार ने सर वो प्रस्ताव भेजना, लेकिन राज्य सरकार भेजेगी नहीं, वो अनारकी लोग इस बारे में जानते नहीं है। इसलिए आप माननीय अध्यक्ष महोदय, चौधरी जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद आपको इस बात का भी कि ये विषय, ये जो डिपार्टमेंट की जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आज की तारीख में, बिकॉज देश के अंदर अर्बन एरिया में 1.87 crore people are not having the houses. Similarly, 6 crore people are not having the houses in the country, in rural as well as urban. और अर्बन एरियाज की जो डिमांड्स रखी हैं, और उसलिए आपको भी धन्यवाद। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वेंकैया नायडू साहब को, जो इस विभाग के मंत्री हैं, जिन्होंने पहली बार कोई व्यक्ति प्रॉमिस करे कि मैं 2022 तक पूरे भारत के अंदर हर परिवार को छत दे दूंगा, पक्की छत देने का। उसमें ये नहीं है, स्मिता जी जो बता रही अभी, इसमें ये वादा नहीं किया कि पूरा पैसा गवर्नमेंट लगाएगी, छत देने में मदद करेंगे। भाई आज की तारीख में EWS हाउस के लिए 1 लाख रुपए का, इसी प्रकार से 1.5 लाख रुपए का LIG ग्रुप के लिए, प्लस
कम दाम के कम इंटरेस्ट पे पैसा दिया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ओनली मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। और इसके बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट में ये और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया कि वी विल प्रोवाइड एकोमोडेशन टू द ऑल। सो ये सबसे अच्छा। इस समय मैं दो बातें माननीय नायडू साहब से अर्ज करूंगा, क्योंकि आपने 21 मार्च को एक पेन के झटके के अंदर 903 प्रोजेक्ट 10 लाख से ज्यादा हाउसेस का सैंक्शन निकाली है 15 राज्यों के लिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट्स टू सबमिट देयर प्रपोजल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय नायडू साहब से अर्ज करूंगा कि देयर आर सर्टेन सजेशंस, काइंडली लुक इनटू दैट। फर्स्ट, मोर बजट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल दिस, बिकॉज अभी आपने 8,000 करोड़ से ज्यादा का बजट तो दे दिया जो प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं, लेकिन ये 2-3 साल में कंप्लीट होंगे। फिर भी मैं करूंगा आरई के टाइम में ज्यादा बजट दिया जाए। मिनिस्ट्री शुड चेक द हायर रिडक्शन इन द एलोकेशन आल्सो। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडर यूटिलाइजेशन, स्टेट्स आर एट फॉल्ट, और यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज को टाइम पे हाउसेस बनाना चाहिए, वो कंप्लीट नहीं करते हैं। सारा सेंटर पे दोष आता है कि साहब पैसा यूज नहीं हुआ, पैसा का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तक नहीं आते, बिकॉज आई वाज द डायरेक्टर ऑफ द लोकल बॉडीज आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर। लास्ट में आई विल रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मंत्री जी कि हमारे स्टेट के तरफ पर ध्यान दें। ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान इज आल्सो बैकवर्ड स्टेट, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हाउसिंग के लिए दिया जाए। और स्पेशली मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी अमृत और आपकी जो स्मार्ट सिटी योजना, ब्यूटीफुल स्कीम्स, उसमें हमारा एक मकराना जो सबसे इम्पोर्टेंट टाउन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, जो वर्ल्ड में फेमस है अपने मार्बल के लिए, उसको अमृत सिटी में इंक्लूड करने का भी कष्ट करें। धन्यवाद, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।